Assalamu alaikum. My name is Nabeel Memon and I am part of the Pakistan Administrative Service. I cleared the CSS exam in 2018, and before that I was a student at LUMS where I graduated with a major in computer science and a minor in history in 2017. So after graduating I took the CSS exam and I was allocated the Pakistan Administrative Service. The reason I took the Pakistan Administrative Service as my first preference and Foreign Service as my second was because I was genuinely interested in public service. मेरे ख्याल से it was very important for me to understand that the theories I had read in my undergraduate degree, how they translate to real life practices on the ground. और मेरे लिए ये भी ज़रूरी था that I start from a perspective of versatility, where I do different enough work that I can choose to specialize in one particular thing. And I'm still making up my mind about that, but I feel like the PAS is well equipped to give us that cross section of society to learn from. So I want to talk about 4 things जो मुझे लगता है are useful for any candidate. My entire video is prefaced with one principle, and that's that no one can tell you what you should do for the CSS exam, but they can tell you what they did and what worked and what didn't. And from this you should extract what might work for you. So 4 things. The first thing is something similar to what Sahibzada Yusuf said in an earlier video. He's the topper from Khyber Pakhtunkhwa, and he talked about doing an honest self-appraisal. और ये honest self-appraisal इसलिए ज़रूरी है आपके लिए ताकि आप ये पहचान लें कि आपकी पढ़ाई बेस्ट किस तरह होती है. और मेरे ख्याल से one way that I did it was by taking one subject and doing it in 15 to 20 days, committing myself to that one subject using one major book, and then using those 15-20 days to examine कि मैं best किस तरह पढ़ता हूँ. Is it in the morning? Is it at night? Is it in breaks? Or is it in one complete go? Do I need 6 hours or 8? Do I need 4 hours or 3? Do I need to write down notes by hand? Do I do it better on a computer? And those 15 to 20 days and the difference between them will help you understand the way you study. And this is not very different from seeing what worked for you in university or in high school. क्योंकि आपने अगर CSS का exam देना है, then you already understand that you have qualified with a bachelor's degree and you have 14 to 16 years of education and experience with studying that you can make use of and evaluating yourself. The second thing is that you should select subjects for good reasons. अगर आप optional subjects select कर रहे हैं, make sure that you are not only selecting them because they are popular or highly recommended, but that you dig deep into the past papers and the sub-syllabus topics and to see how those questions are asked. क्योंकि उम्मन ये होता है that people consider general subjects like physics and chemistry and don't realize that you need to have at least an undergraduate level understanding of those topics. So when you're evaluating a subject, make sure that you consider how it appears in the exam and what your base knowledge is. Obviously there will be subjects जहाँ पे we will all be newcomers. जैसे मैंने anthropology अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा था CSS exam के लिए. But when I was selecting subjects, and I'll tell you what I did, when I was selecting subjects for history, I picked the subject that I was most interested in because I knew I wanted to pick a history subject. और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर US history short है, लेकिन मुझे पढ़ना पहली बार ही है, तो मैं वो क्यों ना पढ़ूँ जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है. And so I picked European history for myself. And this will also help you be a little more confident about scoring trends. अब scoring trends exist करते हैं या नहीं करते, इसमें luck का कितना factor है, is not something that obviously one candidate or 2 candidates can tell you. What we can tell you, what I can tell you is that if you are confident in what you are studying, then you will be less likely to get bored with it. You'll be more interested in reading with energy. You'll be more interested in reading in depth, and you will remember it better because you will think about it more. The third thing is, and this is perhaps the most important, opportunity cost. If you have 3 days left before the exam, and you can study all the subjects, or you can only study the subjects you are weakest in, आपने ये देखना है कि आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने से होगा. और फ़ायदा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमने मार्क्स से डिफ़ाइन करना है, विच इज़ द सैड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स किस तरह मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन इस्लामिक स्टडीज़, क्या आपने वापस वही दोहराना है जो आपने थियोरी पढ़ी है अबाउट वननेस एंड यूनिटी एंड तौहीद, या क्या अगर आप कुछ हदीस और कुरानिक वर्सेस आयात याद कर लें
तो आपके पेपर में मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा। अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप उसमें अगर एक चीज़ पढ़ते हैं तो आप दूसरी चीज़ नहीं पढ़ सकते, एंड दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपने याद रखना है कि आपने वो चीज़ें मैक्सिमाइज करके पढ़नी है दैट विल गिव यू मोर इम्पैक्ट, एंड वो चीज़ें कम पढ़नी है जहाँ पे यू आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यू नीड टू स्प्रेड योर सक्सेस अक्रॉस पेपर्स। द लास्ट थिंग इन माई ओपिनियन इज दैट यू हैव टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर। ये गलती कभी नहीं करनी दैट इफ़ आई एम स्टडिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और वो कॉन्सेप्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है, क्योंकि रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा जवाब उन सब में सिमिलर होगा। ये बात गलत है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर एक पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनर चेक करता है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट चेक करता है। Similarly, with the essay, it's an English expert who checks your organization of ideas and your structure. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लॉ के पेपर में जब जवाब देंगे तो आप केसेस और प्रेसिडेंट्स और पास्ट लीगल थियोरी को एम्फोसाइज करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में आप पॉलिटिकल फिलोसफी को एम्फोसाइज करेंगे, और हिस्ट्री में आप उन इवेंट्स की नरेशन करेंगे जिसकी वजह से कोई चीज़ हुई, व्हाट कॉज्ड इट, हु आर द मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड। उसी तरह आपने हर पेपर को के लिए जब तैयारी करनी है, नोट्स लेने हैं, तो आपने एग्जामिनर को इन माइंड रख के वो नोट्स लेने हैं, उनकी प्रिपरेशन करनी है, एंड बुक्स की सिलेक्शन भी इसी तरह करनी है। दीज आर 10 to 12 different subjects and you have to prepare 10 to 12 different levels of expertise in them. एक और चीज़ इसमें thinking like an examiner ये होती है that you realize what the exam is structured like. Don't wait until the CSS exam to find out that you are not fast with your handwriting. Don't wait until the exam to find out कि आपको brainstorm करने में ज़्यादा देर लग जाती है. In your mocks, in your preparation of past papers, पूरी कोशिश करें कि आप अपने आप को time करें, that you don't go from doing an answer and then studying something else, but you do a 3-hour paper, ताकि आपको उस स्टैमिना का अंदाज़ा हो जो आपको चाहिए फॉर डूइंग द पेपर, क्योंकि दिन में 2 पेपर्स भी होते हैं एंड दे आर फ्रॉम समटाइम्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो यू गेट डिसओरिएंटेड इन द मिडल. सो टाइम योरसेल्फ, रिमेंबर योर डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ आपने स्केड्यूल अपना कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एंड डू इट फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट इन द पेपर. One last thing, and this is about academies. Umuman, going to an academy does not absolve you from studying on your own. जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं in university and you learn something but you have to take out time to revise it yourself. No academy is going to substitute your own hard work, and no notes from someone else, borrowed from someone else, is going to help you replace notes you can make yourself. क्योंकि जब आप खुद absorb करते हैं information, you retain it better and then that saves you a lot of effort later. तो मेरे ख्याल से शुरू से ये अहद कर लेना कि मैंने खुद पढ़ना है is very important for success. This obviously works differently for different people. It just seems like एक वो general universal principle that the more effort you put in earlier yourself, the better your own notes are and the better your own memory is and the better prepared you are in terms of comprehensively understanding a subject. So these were the 4 things that I feel will help anyone prepare for the exam better and increase your chances of success. Ali and Ibrahim are doing a brilliant job with their page, and if I can clarify anything, then I'll ask them to put my contact details below. Good luck and stay safe, and all the best.